नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो क्या हाल है बस कोर्ट ठीक कचहरी है के? सर। बस आपका आशीर्वाद है सर। वैसे तो हमारे यहाँ तो कोर्ट कचहरी में कुछ ना कुछ लगा हुआ रहता ही है। अब पार्टी और यही लोग मतलब हावी हुए हैं सब। जजेस कलकत्ता हाई अपने। कोर्ट का एक जजमेंट मैं पढ़ रहा था। जी दैट सर। वाज रिगार्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी। जी। अगर हस्बैंड ने वाइफ के नाम से बेनामी मतलब प्रॉपर्टी ले लिया है तो दैट नॉट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज कैनॉट बी बेनामी। काउंटेड एज बेनामी। हाँ वो जी कुछ जी, जजमेंट बिल्कुल था है सर। इट कोई वो कैनॉट बी सारथी, काउंटेड एज बेनामी। जस्टिस सारथी करके कोई है, उन्होंने शायद वो हाँ हाँ जजमेंट हाँ। दिया। हाँ हाँ। हाँ, पढ़ रहा था, इंटरेस्टिंग जजमेंट है वो। जी जी, अब उसको मैं भी डाउनलोड करके रखा हूँ मैं, क्योंकि काम देगा ये। हम्म, ये लोग किसी को भी बेनामी प्रॉपर्टी बता देते हैं ना, वो गड़बड़ हो जाता है जी फिर। जी जी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में क्या बोलना है आपको? क्या बोलूँ सर, फंडामेंटल ड्यूटीज वही है, फ्लैग के तरफ, फिर सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, कंट्री का हार्मनी, यही सब है। नहीं, प्रिजर्व बट द हेरिटेज। मेरा क्वेश्चन ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर थे उन लोगों ने क्यों नहीं इंक्लूड किया था इसको? इंदिरा जी ने 1976 में इंक्लूड किया, पहले क्यों नहीं था? उन लोगों ने सोचा होगा कि देखिए, फंडामेंटल राइट्स और सिटीजन का तो ड्यूटी अपने आप होनी होनी चाहिए। अब देश हम्म, के प्रति भक्ति जो भी है, अपना सिटीजन का जो ड्यूटी है, दे थॉट that those will come automatically, because the citizens will feel that they are duty bound. If they are demanding some rights, the rights cannot be, I mean, without duties. So they हम्म। thought that those were not important at that time, maybe. मैं एक जजमेंट पढ़ रहा था जब इसका रिसर्च कर रहा था, जी तो सर। उसमें एक जजमेंट आया है चंद्रभान भवन बोर्डिंग एंड लॉजिंग वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर आया था। अच्छा अच्छा, ये कब का सर? 1969 का जजमेंट है ये, 69 का। बिफोर अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट के पहले का है ये। जी जी जी। इसमें लिखता है द कोर्ट upheld the restriction and the importance of social welfare for the judgment emphasized the constitution conceive of both right and duties. These duties play a fundamental role in the governance of the country and should be followed by the hotel owner. The court read the provisions of Part 4 of the Constitution, Directive Principle of State Policy, as giving the state the power to impose duties on certain citizens, connecting the imposition of ड्यूटीज टू द अचीवमेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। मुझे लगता है यहाँ से इसका जेनेसिस है। यही होना तो चाहिए लॉजिकली सर, यही होना चाहिए। इफ पीपल आर नॉट कॉन्शियस ऑफ द ड्यूटीज, तो हाँ, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। व्हाट आई फील इज सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है ये, और इसमें हेगड़े साहब ने ये जजमेंट लिखा था। के एस हेगड़े, अपना जीके हेगड़े थे, जी साथ जी। में सीकरी साहब थे, और इसके अलावा एस एम मित्तर थे, के एस रे थे, ए एन रेड्डी थे, और पी जगमोहन थे। जी जी इसका जो साइटेशन है वो 1970 AIR 2042 है। जी तो इन्होंने, अब देखते हैं क्या किया था इन्होंने। ये मिनिमम वेजेस एक्ट के ऊपर था, तो उसमें एक वैलिडिटी ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 सेक्शन 5 इन ब्रैकेट 1 को इन्होंने चैलेंज किया था। Power of government to fix minimum wages either by जी जी method in section 51A or 51B, whether unguided. Power of government to fix minimum wages, whether restrictive of trade and business, whether a quasi-judicial power requiring compliance with rules of natural justice, fixing different rates of wages for different industries and zones, whether valid, valuation of food supplies to workmen. अब इसमें इन्होंने जो हेल्ड किया है वो उसको देखते हैं क्या बोल रहा है ये। बाद भी दिखाऊंगा इसको, थोड़ा सा जी सर। देखते हैं। जी सर। On the fact of the case, the content relating to the value of the food that may be supplied to the employee was not merely petty but misconceived. The supply of meal to worker was only an option given and not a duty imposed on the employer. करेक्ट Therefore, the करेक्ट procedure सर। prescribed in Rule 21 of the rules framed under the Act was inapplicable to the case. The supply of food was an amenity
and the rule applicable was rule rule 22 in bracket 2 in bracket fifth question whether the fixation of is a quasi judicial are left open. उसके बाद में फिर क्या लिखा है इन्होंने? On the basis of material and record, it could be said that the various zones had no rational basis. In considering the zone, the relevant consideration is the cost of living in a locality and not the cost of living index. अच्छा, तो उसके फेवर में गया लगता है. Hmm. There Cost was of living no in the there, locality. there was also no substance in the contention that the government was not competent to enhance the rate mentioned in the proposal published. If it had power to reduce those rates as described by the employer, it necessarily followed that it had power to enhance also. There was no merit in the contention that the government must go on publishing proposal after proposal until a stage is reached where no change whatsoever is necessary to be made in the last proposal made. Okay. तो ये जो है ये जजमेंट पहले आया था. इसके बाद ही लगता है इनके दिमाग में आया होगा कि चलो ठीक है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कुछ ना कुछ बना ही देते हैं. एंड since emergency was under force, there was no question of opposition also Correct, that sir. time. Correct. Correct, तो sir. इनको लगा कि ठीक है इसको पास करवा देते हैं तो हो जी जाएगा. जी तो मैं एक आर्टिकल दिखाता हूँ आपको. उस आर्टिकल को थोड़ा अच्छा एलाबोरेटेड आर्टिकल है वो. जी सर. तो वो आईएएस प्रिपरेशन के लिए, लेकिन ठीक है हमारे लिए रेलेवेंट है तो उसको शेयर करने में कोई तकलीफ नहीं है. स्वस्तिक जी नमस्कार. अगर आपको कुछ पूछना है कहना है तो आप अंदर आ जाइए. हम लोग आपको लेने में कोई गुरेज नहीं करेंगे. आप आके देखिए पढ़िए अपनी नॉलेज इनहेंस करिए और पब्लिक को भी बताइए कि क्या है क्या नहीं है. ये कहाँ गया ये भगवान किधर गया हो गया. हाँ ये है यही ना. हाँ आ गया. जी जी आ गया सर. मे 9 का आर्टिकल है इसलिए मतलब लेटेस्ट मैं वो करता हूँ जिससे एकदम कि लेटेस्ट है. पढ़ता हूँ सर आगे. पढ़ो. Fundamental duties are the moral and civic obligations that all citizens of a nation have. The list of fundamental duties provided in Part 4A of the Constitution under Article 51A of India to inspire patriotism and strengthen India's unity. The fundamental duties of citizens were added in the Constitution on the recommendations of the Swaran Singh Committee. In 2002, one more fundamental duty was added by the 86th Amendment Act in 2002. The fundamental duties in the Indian Constitution are inspired by the Constitution of the erstwhile USSR. You're absolutely correct, sir. This article explains the fundamental duties, that is Article 51A, which is important ठीक है जाने for दो. the for the Indian polity. The background. At the time of its inception in 1950, India's original constitution included no mention of citizens' duties. Citizens' fundamental duties were introduced to the constitution by the 42nd Amendment in 1976 after the suggestions of the Swaran Singh Committee, which had been formed by the government earlier that year. The fundamental duties assist to manage citizens' behavior and achieve excellence in all aspects of citizens' lives. There are two types of fundamental duties, moral and civic duty. Moral duties upholding the greater goals of the freedom fight. The great goals of the freedom fight, and civic duties, respect for the Constitution, the national flag, and the national anthem. The fundamental duties of the Indian Constitution are are modeled after the Constitution of the former Soviet Union. Notably, one of the Constitution's major democratic countries, such as the US, Canada, France, Germany, Australia, and others, include a list of citizens' obligations or fundamental duties. So these fundamental duties are regarded as the moral responsibilities of all people to encourage patriotism and protect India's unity. Article 51A of Part 4A of the Indian Constitution addresses the fundamental duties. The required fundamental duties represent some of the noblest values proclaimed by our great saints, philosophers, social reformers, and political leaders. कुछ ज्यादा ही चमचागिरी कर दिया लगता है. इतना ही है. अच्छा, स्वरण सिंह Committee's recommendations. The recommendations of the Swaran Singh Committee of 1976
are as follows. It recommended the inclusion of a separate chapter on fundamental duties in the Constitution. It stressed, it stressed that the citizens should become conscious that in addition to the enjoyment of rights, they also have certain duties to perform, as well as it suggested the incorporation of 8 fundamental duties in the Constitution. The central government accepted these recommendations and enacted the 42nd Constitutional Amendment Act in 1976, which added a new part, namely Part 4A, to the Constitution. This new Part 4A consists of only one article, that is Article 51A, for which for the first time specified a code of 10 fundamental duties of citizens. Interestingly, certain recommendations of the committee were not accepted and hence not incorporated in the Constitution, which includes the Parliament may provide for the imposition of such penalty or punishment as may be considered appropriate for any non-compliance with or refusal to observe any of the duties. No law imposing such penalty or punishment shall be called in question in any court on the ground of infringement of any of the fundamental rights or the ground of repugnancy to any other provision of the Constitution. Duty to pay taxes should also be a fundamental duty of the citizens. तो बोल रहा है these were not इतना accepted. इतना क्लेवरली जो जो हाँ, मतलब इन्फोर्सिबिलिटी को वो कर दिया, खत्म कर दिया कि इन्फोर्समेंट नहीं कम कर कर सकते। दिया। हाँ, उनको मालूम था कि कांग्रेसी भी फंस जाएंगे ना फिर। हाँ, फिर सब वही वोट के चक्कर में सब होता है। The 86th Amendment of 2002. The 86th Constitutional Amendment of 2002 added Article 21A to the Indian Constitution, which states that the state shall provide free and compulsory education to all children aged 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine. इसकी Article वर्डिंग 50, वर्डिंग देखिए कैसे बोल रहे हैं, द जी, स्टेट as कैन प्रोवाइड। may as law determine. Duty has been added, fundamental duty has been added, and the duty is towards state, state shall provide, पब्लिक के लिए नहीं है ये, देखो। जी, जी. So it is the Article duty 50 of the, it is the duty of the state. of the state. Yes. Correct, sir. Article 51A was also amended and after clause J, the following clause K was added. Who is a parent or a guardian to provide educational opportunities to his child or as the case may be, ward between the ages of 6 and 14 years. It हम्म। made the provision of educational opportunities for children a fundamental obligation of the parents. हम्म। अब ये है प्रोविजन, क्या क्या है ये? जी, जी, जी. 51A, so small a, to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. हम्म। ना अच्छा, इसको हिंदी में 51. समझा सकते हैं कि भैया राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना सबका फंडामेंटल ड्यूटी है। और देश के जितने आइडियल्स, मतलब आइडियल्स को हिंदी में क्या बोलें? आदर्श। आदर्श, आदर्श और जितने इंस्टीट्यूशंस, मतलब हाँ। इंस्टीट्यूशंस मतलब स्टेट इंस्टीट्यूशंस भी आ जाएगा इसमें। हम्म। वही आएगा जितने स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब गवर्नमेंट हो चाहे जो भी, as the case may be, those should be respected by the citizens. 51A small b, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. यस, मतलब महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की पूजा करो। हाँ, यहाँ तो वही बोले नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, तो वो तो सुभाष चंद्र बोस का नाम ही नहीं है फिर, या नेवल म्यूटिनी और जितने म्यूटनीज हुए उसी के चलते तो फ्रीडम मिला. 51AC, to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India. 51AD, to defend the country and render national services when called upon to do so. 51AC, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcendenting religious, linguistic, and, and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women.
समझ में आ रहा है क्यों नहीं इसको एनफोर्स किया था, तो वैसे ही तो पहले अंदर To जाता था। promote harmony and the spirit of common brotherhood among the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women. ट्रिपल तलाक तो डेरोगेटरी है ना डिग्निटी ऑफ वुमेन के लिए। अभी और बहुत कुछ बाकी है सर, देखते हैं अब यूसीसी आने के बाद क्या होता है, हाउ दे आई मीन ओके। make the draft 51AG to value, protect, and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have an compassion for living creatures, बकरियों का नहीं होना चाहिए, हैं? बकरियों का, ऊँटों का, गायों का नहीं है, बाकी सबका हो सकता है। living creatures. 51AH to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. 51AI to safeguard public property and to abjure violence. 51AJ to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. दादा डोंट यू थिंक दैट दिस वाज एन आई वाज फॉर द पब्लिक कि अरे बाप रे हमारे दिमाग में ये है वो है, जबकि Abjure violence, but उल्टा safeguard public हाँ, कुछ property. उल्टा ही चल रहा था उस समय। ये पब्लिक को 51A, उल्लू बनाने के लिए किया था इन uh, लोगों ने लगता है। अच्छा ये क्या पेरेंट गार्डियन 51A, गार्डियन गार्डियन duty of the parent or guardian to provide opportunities for education to his child as the case may be between the age of 6 and 14 years, added by the 86th Amendment Act 2002. Fundamental duties are obligatory in nature. लो Of मैंडेटरी नहीं है, obligatory, मैंडेटरी however, नहीं। obligatory. However, the Constitution has no provision for direct enforcement of these responsibilities. This is also worth noting. No provision for direct enforcement of these responsibilities. So if there's no provision for direct enforcement, then who will, I mean, bother to follow these things? A person should equal. Acha, there's also no consequence to prohibit the infringement. No consequence to prohibit the infringement. However, the following facts demonstrate the importance of fundamental duties. A person should equally respect his or her fundamental rights and obligations because, in any situation, if the court learns that a person who wants his or her rights to be enforced is careless about his or her duties, the court will not be lenient in his or her case. So it depends on the court to be lenient or not lenient, depending on the case. If the person is careless in performing his fundamental or her fundamental rights and duties, if he wants to enforce his own rights, then they should be checked in accordance with the duties. Any confusing legislation can be read using fundamental duties. मतलब फिर ये कोर्ट में आ गया, इंटरप्रिटेशन करने का है उसको, Ah, फिर कोर्ट में जाने का। bilkul, bilkul. Confusing legislation will go to the court. If the legislation gives effect to any of the fundamental obligations, the court may find it reasonable. If the legislation gives effect to any of the fundamental obligations, the court may find it reasonable. In this manner, the court can prevent such legislation from being deemed unconstitutional. तो सारा कोर्ट पे ही छोड़ दिया। तो इफ एन एक्ट इज पास्ड मतलब directing the common man to act in such a way, then that will be included in fundamental duties. That should be करेक्ट सर, in accordance करेक्ट। with fundamental duties, and it cannot be held as unconstitutional by the court. ऐसा करके जी बोलना जी चाह रहा है ना ये। जी, ऐसा ही बोल रहा है, ऐसा ही बोल रहा है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज के बेसिस पर एटलीस्ट लेजिस्लेटर जो है वो कुछ मतलब स्टेच्यूट तो बना ही In सकते हैं। some, in some states, they have done well. For instance, in UP, ओके। हाँ। they have taken much important steps, a lot of important steps in this direction. राइट एंड ड्यूटीज आर They म्यूचुअली are एक्सक्लूसिव। mutually exclusive. The essential obligations serve as a continual reminder to all citizens, and the Constitution expressly grants them certain fundamental rights.
Citizens must adhere to some fundamental principles of democratic conduct and behavior. If one carefully अरे examines कोई the आदमी जब Constitution, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की कोशिश करेगा तब ना, वो तो एक्स मुस्लिम चैनल जाके कुरान पढ़ते रहते हैं, बाइबल पढ़ते रहते हैं, कौन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की कोशिश करता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना तो ऑब्लिगेटरी कर दो, कम से कम सॉरी मैंडेटरी कर दो। कम से कम जो आईएएस प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उन लोग तो पढ़ते ही हैं। हाँ, बाकी उनको बाकी का तो मैं नहीं जब बता पूरी होती है वो पाऊंगा। तभी तक पढ़ते हैं जब तक पास नहीं होते। पास करने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन गया, तेल लेने के लिए नौकरी मिल गई, उसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के एक तरफ रख देते कुछ लोग रखते हैं अपना, देखते हैं, ऐसी बात नहीं, बट वेरी मिनिस्क्यूल नंबर। If one carefully examines the Constitution, he or she will uncover not only his or her rights but also his or her obligations. वो इसीलिए बोल रहा है, if one carefully examines the Constitution, if one does. The preamble of the Indian Constitution contains the fundamental rights guaranteed to all people, such as freedom of opinion, speech, belief, faith, and worship. These are not absolute rights, since the state can limit them in the interests of the society. The remaining preamble emphasized obligations such as justice, social, economic, and political. Then, coming to the features of the fundamental duties, some of them are moral duties while others are civic duties. For example, cherishing noble ideas of freedom struggle is a moral precept, while respecting the constitution, national flag, and national anthem is a civic duty, which some people are reluctant to follow. Still, they essentially contain just a codification of tasks integral to the Indian way of life, हैं। to the Indian way of life, like Indian traditions, mythology, religions, and practices. The fundamental duties are confined to citizens only and do not extend to foreigners. They are also non-justiciable, and the Constitution does not provide for the direct enforcement by the courts. Significance. The significance of fundamental duties is that they define the moral obligations of all citizens to contribute to the promotion of patriotism and the preservation of India's unity. They serve as a reminder to the citizens that while enjoying their rights, they should also be conscious of duties they owe to their country, their society, and their fellow citizens. They serve as a warning against anti-national and anti-social activities. I do not know what warning is there. Hmm. कुछ नहीं। Yeah, gee. They serve as a source of inspiration for citizens and promote a sense of discipline and commitment among them. This is also sadly lacking. They help the courts in examining and determining the constitutional validity of a law. आई ये थिंक ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज का सबसे बड़ा पार यही है, बस और कुछ नहीं है, हाँ, और तो मतलब कुछ घूम भी फिर नहीं। कर कोर्ट के ऊपर ही डाल दिया पूरा। हाँ, कोर्ट बोलेगा तुम्हारी ड्यूटी थी, तुमने क्यों नहीं किया, उस चक्कर में फिर वो रगड़ देगा किसी को भी, ये इतना ही है। If you are asking for fundamental right, you have to perform certain fundamental duties. If you fail to perform fundamental The duties, courts will then you examine are that। not entitled for that right. ऐसा करके मारेगा वो। जी जी। They are enforceable by law. Hence, the Parliament can provide for the imposition of appropriate penalties or हाँ, punishments for failure to fulfill any of them. हाँ, they are enforceable by law. मतलब you have लॉ to बनाना enact the पड़ेगा जी। law under 51A. Only then it will be enforceable. बाकी कुछ नहीं करेक्ट है। होगा। The list of criticism, the list of duties is not exhaustive as it does not cover other important duties like casting votes, paying taxes, family planning, and so on. Paying taxes is an पेइंग important टैक्सेस तो सोरेन सिंह ने लिखा था, उसको उठा के फेंक दिया था ना। नहीं, लेकिन टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। How can one evade taxes unless somebody लिखा comes भी हुआ under a different? है पे टैक्स, जो चोरी करते हैं मतलब उनके ऊपर मुकदमा करोगे, वो तो होता ही है। क्या क्या कहना क्या चाहता है ये? एवरीबॉडी हैज टू पे टैक्स जब पैदा हुआ तो, दैट्स व्हाट No, no, व्हाट everybody may not be eligible to pay or तो उसके be लिए तो इनकम टैक्स है ना, उसमें तो लिमिट है ही duty-bound। है हाँ, ना। इनकम टैक्स एक्ट का लिमिट जो है उसके ऊपर जाने से तो देना ही पड़ेगा ना। तो ये फिर पेइंग टैक्सेस की बात क्या कर रहा है? व्हाट इज दिस? गलत गलत लिख रहा है, बिकॉज there are two categories of people, one who are eligible। अच्छा, indirect taxes are always collected। हाँ, आज एक बिस्कुट बिस्कुट का पैकेट कोई खरीदता है तो उसमें जीएसटी वगैरह सब सब लगा नहीं हुआ है। होता। हाँ,
सब इंक्लूडेड है पेट्रोल की एमआरपी बात में। करो ना, पेट्रोल डीजल की बात करो, जैसे पेट्रोल सब भरवाने सब जाते हो तो सब। सारे के सारे टैक्सेस घुस जाते हैं उसी के अंदर। हाँ, तो जिसके पास, बेचारे के पास गाड़ी भी नहीं है, तो उसको भी तो इनडायरेक्टली अफेक्ट करता ही है, टैक्स तो देना ही पड़ता है। भिखारी भी अगर कुछ खरीदता है तो उसको भी देना पड़ेगा। Some of the duties are vague, ambiguous, and difficult to be understood by the common man. This is correct. करेक्ट। For example, certain interpretations हाँ, uh, सेकंड can be सेकंड। given to the phrases like ideals, noble ideals, composite culture, scientific temper. So these have to be explained properly. ना? हम्म। हर आदमी का साइंटिफिक टेम्पर तो नहीं भी हो सकता, बट दे शुड adhere to certain policies which promote scientific temper. And then composite culture, they have been described by the critics as a code of moral precepts due to the non-justiciable character. सही है। यस। Superfluous, यस। because of the duties included in the Constitution as fundamental, would be performed by the people even though they were not incorporated in the Constitution. Okay, जस्टिस वर्मा Justice Verma Committee to review fundamental duties. Justice Verma Committee was constituted in 1998 to plan a strategy, and to work out a methodology for operationalizing a program initiated countrywide to teach fundamental duties and make it enforceable in every educational institution and initiate in servicing training. तो सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्यों, इन एवरी फैसेट ऑफ आई मीन life, whether a person is employed somewhere or whether is a student or is doing some business, the program should cover each and every citizen to educate them. It is recommended that the duty to vote at elections, actively participate in the democratic process of governance, and pay taxes should be included in Article 51A of the Constitution. ये पे Those, टैक्सेस क्या है? बार बार वही बोल रहे हैं, पे वर्मा टैक्सेस। कमेटी ने क्या किया? पे टैक्सेस मींस व्हाट? आई डोंट अंडरस्टैंड एनीवे। There must be a ceiling for everything. If a person is under the ceiling, is not required to pay taxes, but indirect taxes are always collected, whether the person likes it or not. ये कहीं So, एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा, फार्मर की बात तो नहीं कर रहा कि उनको भी टैक्स भरना पड़ेगा, उसके लिए घुमा रहा है ये। कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का? एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है ना, हाँ हाँ। तो कहीं उसके लिए तो नहीं लेके जा रहा कि मतलब एवरी सिटीजन ऑफ नहीं इंडिया तो है। एग्जाम्पशन, सर जहाँ एग्जाम्पशन है वहाँ तो ठीक है, यू कैन अग्री ऑन दैट, बट पेइंग टैक्सेस ऐसे मतलब ब्लैंकेट लेकर है ना, इट फिर शुड क्या बी। बोल रहा है? फंडामेंटल ड्यूटीज It फॉर also identified legal provisions for the implementation of some of the fundamental duties, such as prevention of insults to the National Honor Act 1971. This prevents disrespect to the Constitution of India, the national flag, and the national anthem. कितनों को पकड़ा है आज तक? The Protection of Civil Rights Act 4, 1955 provides for punishments for offences related to caste and religion. The Unlawful Activities Prevention Act of 1967 provides for the declaration of a communal organization as an unlawful association. Is it applicable? There are so many communal organizations. रूल्स It तो takes a बनाते हैं। lot. So it takes a lot of time to declare them as unlawful. कुछ भी ये क्या जब बोल रहे तक हैं? कंक्लूजन में क्या the, बोल रहे हैं? the moral benefit of basic obligations would be to achieve a democratic equilibrium by making individuals aware of their duties as much as they are aware of their rights. This is correct. Thus, fundamental duties play an important role in Indian democracy. The adjective basic linked to the tasks makes them extremely significant, and hence they must be followed by everyone. Many obligations have also been established as distinct laws and made enforceable by the law. But this does not diminish the importance of the other duties outlined in Article 51A. मतलब जो लॉ नहीं बना हुआ है इसके ऊपर, does not diminish the importance of the others, where there are no laws as such framed.
for enforcing those duties. इनको पढ़ने के बाद तो ये लगता है कि दिस आर्टिकल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंदिरा जी ओनली फॉर द नेम सेक, अपना नाम वो करने के लिए कि अरे वाह क्या मतलब देशभक्त है और सबको हाँ, बोलते देश हैं के कि लिए देशभक्त बहुत बन कुछ जाओ, ये हो रहा बन है। जाओ, वो बन जाओ। इसके अलावा इसको कुछ भी नहीं था इसका मतलब, क्योंकि जब तक आप इसको एनफोर्स नहीं करोगे, क्लियर नहीं करोगे, तो क्या मतलब क्या है? अच्छा, ये कोर्ट पर तो जो डाल दिया, somebody has to approach the court. हाँ, अब somebody has to approach। किसके पास में इतना पैसा होता है कि वो कहाँ पे जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, उसके बाद में वकील को एंगेज करना पड़ेगा, पैसा नहीं जी लगेगा जी उनको? जी जी जी। कुछ भी मतलब तो इसीलिए मतलब सही में वेग ये रखा गया। आई बस है ये, और कुछ नहीं है। ये वकीलों के जजेस से कमाने का तरीका है, और कोई बात नहीं है। ये तो उस दिन आप बोल ही रहे थे। ये लो, ये है वो हाँ, चंद्रबाबू Chandra भवन। Bhavan Boarding and Lodging versus State of Mysore, 1969. Fundamental duties were incorporated into the Constitution by the 42nd Amendment Act passed in 1976 by the Indira Gandhi government. However, the Supreme Court engaged with the duties citizens owed to the state in 1969, much before the 42nd Amendment was passed. In Chandra Bhavan Boarding, hotel owners challenged a legislation introduced by the state of Mysore, imposing minimum wages for hotel and restaurant employees in the state. The court upheld the legislation, stressing the importance of social welfare. Further, the judgment emphasized that the Constitution conceives of both rights and duties. These duties play a fundamental role in the governance of the country and should be followed by the hotel owners. The court read the provisions of Part 4 of the Constitution, Directive Principles of State Policy, as giving the state the power to impose duties on citizens, connecting the imposition of duties to the achievement of directive principles. करेक्ट। चलो ठीक है, अभी इधर क्या है ये? Balaji Raghavan versus Union of India, 1995. The court upheld the constitutional validity of national awards such as the Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, and Padma Shri. The judgment stressed that conferring these awards is not violative of the principles of equality, as these awards recognize merit. Article 51A(1) of the Fundamental Duties chapter exhorts citizens to strive towards excellence in all activities. A system of instituting awards is necessary to incentivize citizens and to recognize excellence in the performance of these duties. हम्म। अब सब लोग बढ़िया काम करने लगेंगे तो सबको थोड़ी ना मिलने वाला है। इधर पढ़ो, ये देखो क्या बोल रहा है। जी, एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ 2, 2000 का। In MC Mehta versus Kamalnath 1996, the court invalidated the lease granted by the government of Himachal Pradesh to the developers of a ये hotel मुजर वियर सीढ़ी बनाता था ना वहां पर, उसके being चक्कर में। built in an ecologically sensitive area. The court in MC Mehta 2, 2000 determined the fine that the hotel developers were to pay for harming the environment and ecology of the region. The petitioner, an ardent environmentalist, argued that persons who disturbed the ecological balance violated not only just the fundamental right to life but were also in violation of their fundamental duty to protect the environment. The court emphasized that Article 51G imposes a duty on every citizen to protect and improve the natural environment and to have compassion for living creatures. This duty must be read in conjunction with Article 48A of the Constitution, which imposes an obligation on the state to protect the natural environment, and Article 21, which bars disturbance to air, water, and soil necessary to sustain life. इसका भी देखिए, बार बार कोर्ट जाने के बाद कुछ हो रहा है, अपने आप क्यों नहीं होता है? 2003 Javed versus State of Haryana. Persons disqualified from elections challenged the Haryana Panchayat Raj Act 1994. The act debarred persons with more than two children from holding certain offices in the Haryana Panchayat. The petitioners claimed that the act was arbitrary, violated the right to religious freedom, and that it had a disparate impact on women.
The state government claimed that this legislation was enacted to improve awareness of Haryana's family planning program. The court upheld the act. The judgment stressed that fundamental rights must be read in conjunction with the directive principles of state policy and fundamental duties. The concept of sustainable development is enshrined in the fundamental duties. This means that the expansion of the population must be kept in check. The court thus emphasized that fundamental rights must not be read in isolation, they must not be tempered by duties. कौन था जज यार? ये बड़ा भयंकर जजमेंट दिया था, ऐसे तो नॉर्मली होता नहीं है ना। बिल्कुल बच्चों के ऊपर मतलब पाबंदी लगाया गया। और वो भी अपने उनके बच्चे। बच्चों के ऊपर, जो हमारे हम्म। सबसे हाँ हाँ हाँ। चहेती कम्युनिटी है। जी जी। ओ, लाहौटी साहब का है। लाहौटी साहब, अशोक भान, ये अरुण अरुण कुमार। कुमार ने लिखा होगा, अरुण कुमार साहब अच्छा लाहौटी साहब खुद लिख रहे हैं, ओके। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन इम्पोर्टेंट जजमेंट है ये। बहुत बहुत हिम्मत वाला जजमेंट है भाई, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत तेरी। बाप रे, इतना पिटीशन फाइल हुआ था, देखें आप। ओरे बाप रे, लाइन से। देखिए, लीव ग्रांटेड इन ऑल स्पेशल लीव पिटिशंस। हाँ, वही पंचायत राज एक्ट चैलेंजिंग द वायरस ऑफ द प्रोविजंस। टू लिविंग चिल्ड्रन होने से सरपंच, पंच ऑफ ग्राम पंचायत, मेंबर ऑफ पंचायत समिति और जिला परिषद, ये नहीं हो सकता। That person will incur disqualification even if elected. ये पढ़ो द चैलेंज। एक मिनट में देखता हूँ कहाँ से पढ़ना है वो, देखो। जी जी जी। इसके पहले कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, अरे पठान वर्सेस डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड अदर्स। देयर इज नथिंग in the extract of the Quranic text cited before the court that contracting plural marriages is a matter of religious practice amongst Muslims. A bigamous marriage amongst Muslims is neither a religious practice nor a religious belief, and certainly not a religious injunction or mandate. The question of attracting 15:1, 25:1, or 26b to protect a bigamous marriage and in the name of religion does not arise. पहले से सब कुछ चला आ रहा है यार, क्या मतलब है, हाँ, क्यों चिल्लाते रहते हैं लोग। तो देखिए, तो ये जजमेंट है पूरा, उसको साइट किया गया है। फिर हमारा सीसीएस ये देखो यहाँ क्या बोल रही है। CCSC rules. However, few decisions by the high courts may be noticed. In Badruddin versus Aisha Begum, 1957, ALJ 300, the Allahabad High Court ruled that though the personal law of Muslims permitted having as many as 4 wives, but it could not be said that having more than one wife is a part of religion. Neither is it made obligatory by religion, nor it is a matter of freedom of conscience. Any law in favor of monogamy does not interfere with the right to profess, practice, and propagate religion, and does not involve any violation of Article 25 of the Constitution. ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, देखिए, तो 57 में दिया गया। Restrain any मतलब government servant having a living spouse from entering into or contracting a marriage with any other person. A similar provision is to be found in several services ruled. हाँ, No, no decided case in this court has been brought to our notice, so and so. फिर वो यहाँ लेके जा रहे हैं, अच्छा, ओके।
मतलब जब इनको कहीं भी जजमेंट नहीं मिलता तो ये नीचे हाई कोर्ट के जजमेंट में कर लेते हैं ला करके। चलिए इसको तो मान्यता तो जब दे रहा है तो दीज जजमेंट्स आर वेरी ओल्ड। आप सही बोल रहे हैं। प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगमी ये भी है। सरला मुदगल in the meaning of religion. The term is employed in Article 25, and the nature of protection conferred by Article 25 stands settled by the pronouncement of the Constitution Bench decision in Dr. M. Ismail Faruqi and others versus Union of India and others 1994 6 SCC 360. The protection under Articles 25 and 26 of the Constitution is with respect to religious practice, which forms an essential and integral part of the religion. A practice may be a religious practice, but not an essential and integral part of practice of that religion. The latter is If not it is protected not by essential integral part of the practice, then it is not protected by article, ये बोल रहे हो। करेक्ट। ओके। हाँ, तो उसी से फिर उसी को पकड़ कर नीचे जो है पॉलीगमी something that is injurious to public morals. देखिए इसमें बहुत सारा एग्जांपल उस तरह दिए। मतलब आज का ये मुद्दा नहीं है। देखिए पहले से ही मतलब द कोर्ट्स वर वेरी कीन टू आई मीन अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल राइट्स आर टू फंडामेंटल बी राइट रेड इन आइसोलेशन, नॉट टू बी रेड इन आइसोलेशन बोल रहे हो। हाँ? they have to be read along with the chapter on directive principles of state policy and the fundamental duties enshrined in Article 51A. Under Article 38, the state shall strive to promote the welfare of the people and developing a social order empowered at distributive justice, social, economic, and political. Under Article 47, the state shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and in particular, the constitutionally downtrodden. Under Article 47, the state shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties. None of these lofty ideals can be achieved without controlling the population, inasmuch as our materialistic resources are limited and the claimants are many. The concept of sustainable development, which emerges as a fundamental duty from several clauses of Article 51A, two dictates the expansion of population being kept within reasonable bounds. The menace of growing population was judicially noticed, and constitutional validity of legislative means to check the population was upheld in Air India versus Nargish Mirza and others, 1981 4 SCC 335. The court found no fault with the rule, which would terminate the services of air hostesses on their third pregnancy with two existing children, and held the rule both salutary and reasonable for two reasons. In the first place, the provision preventing a third pregnancy with two existing children would be in the larger interests of the health of the air hostess concerned, as also for the good upbringing of the children. Secondly, when the entire world is faced with the problem of population explosion, it will not only be desirable but absolutely essential for every country to see that the family planning program is not only whipped up but maintained at sufficient levels so as to meet the danger of overpopulation, which, if not controlled, may lead to serious social and economic problems throughout the world. हम्म। चलो जजमेंट यार है। ये तो बहुत पहले से कर रहा है ये सब। देखिए तो ये जजमेंट को ये लोग हाईलाइट क्यों नहीं करते हैं, क्या मतलब है ये तो। ये बहुत इस पर इंपॉर्टेंट जजमेंट है सर। लाहौटी साहब को कभी क्रिटिसिज्म भी नहीं हुआ इस बारे में कि तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया कुछ भी कर दिया, बाकी सबको बकवास करते रहते हैं लोग। नहीं लेकिन ये कितना देखिए इम्पोर्टेंट जजमेंट है पॉपुलेशन को लेकर। यस यस और यस। रिलीजन के साथ उसका जो मतलब जोड़ते हैं, अभी भी जोड़ रहे हैं लोग। तो इसको कब तक जानबूझ करके ये लोग अंडर कारपेट रखते होंगे मालूम है। यही समझ में आ रहा है सर अभी। क्योंकि इसको तो रेफर किया जा सकता है अभी भी। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिखा है सर। जो बात आज हम लोग सोच रहे हैं वो पहले से देखिए दिस पीपल हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट इट।
Rangnath Mishra versus Union of India. The Supreme Court directed the Centre to implement recommendations of Justice J. S. Verma Committee with respect to disseminating information on fundamental duties to the public. The committee was set up in 1998 to suggest ways in which fundamental duties may be taught in schools. The report, issued in 1999, recommended that awareness about fundamental duties be created in educational institutions. The Verma Committee further recommended that the duty to vote in elections and actively participate in the democratic process must be included as a fundamental duty. ये सारे जजमेंट तभी आ रहे थे जब इनकी गवर्नमेंट थी, वाजपेयी साहब गवर्नमेंट थी लगता है। अच्छा, ये तो पहले का है। ये पहले का है सर। ये 2000 वाला तो इन्हीं का टाइम पे वाजपेयी तो साहब की गवर्नमेंट थी। 57 का आप पढ़े देखिए, 57 में भी यही चीज, दोज पीपल हैड सम विजन, दैट मीन्स मानना ही पड़ेगा। 12। अच्छा, ये क्या हुआ? हाँ, रामलीला होम मिला। Ramlila Maidan incident versus Home Secretary. The court took suo moto cognizance of the eviction of hundreds of people from the Ramlila Maidan in New Delhi in February 2011. Spiritual Guru Baba Ramdev had obtained permission from the Delhi police to conduct a yoga training camp at the grounds, but instead staged an anti-corruption rally. The Delhi police subsequently revoked the permission they had granted, evicting sleeping protesters in the middle of the night. The court held that the eviction was unreasonable as sufficient notice was not provided to the public before they were evicted. However, it emphasized that while citizens are entitled to fundamental duties, a fundamental duty to obey lawful orders and extend full cooperation in maintaining public order and tranquility is cast on citizens. The court stressed that the organizers were bound by the fundamental duty to safeguard public property and abjure violence. They should have requested the public to leave the grounds before the police arrived. अब ये दिल्ली में क्यों नहीं लागू हुआ? नौटंकी कर रहा है कोर्ट ना। कोर्ट जो है ना सर कर जाता है कुछ चीजों से, बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ देखिए सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले रहा है, और उस समय इतना मतलब चारों तरफ प्रोटेस्ट और रास्ता जाम और ये वो किया गया नेशनल कैपिटल में, हम्म। एक आदमी कुछ नहीं बोला, ना कोई कोर्ट गया, ना कोर्ट खुद खुद कुछ किया। ठीक है दादा, बंद करते हैं इसको, बहुत हो जी गया। सर। सो जी सर। ये थैंक यू वेरी मच फॉर ये द हमारे अपॉर्चुनिटी। हमारे 51A का फंडामेंटल ड्यूटीज का अंत होता है। हम लोगों को जितना मतलब हो सका हम लोगों ने समझा दिया और है, इससे आप लोगों अधिक है भी ने। नहीं सर, इससे अधिक है भी नहीं। हाँ। और ठीक है, इस वीडियो को थोड़ा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर लाइक करेंगे तो जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है उसे थोड़ा सा और पब्लिक के पास में पहुंचेगा, जी जी, इससे भी लोग आगे बढ़ेगी। हमारा इंटेंशन यही है कि पब्लिक के पास में पहुंचे, मैक्सिमम लोग जो समझें कि फंडामेंटल राइट क्या होते थे, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती थी, और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं और इनके रिलेशन क्या हैं। इतना हमारा हो सका हम लोगों ने कोशिश किया समझाने की। बाकी सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या और करते सर जजमेंट दिखाने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उस जजमेंट से भी हम लोगं को बहुत कुछ पता चला। मतलब हैं। कब से द कोर्ट्स वर स्ट्राइविंग टू एनफोर्स सर्टेन इम्पोर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज विच आर बीइंग टॉक्ड अबाउट टुडे, बट कितने पहले से 57 से कोर्ट लगा हुआ था इसके पीछे। केशवानंद भारती केस को मैं आपको याद दिलाता हूँ, फिर से पढ़िए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, 13 के 13 जजेस ने बोला है, दिस इज हाई टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड इम्प्लीमेंट यूसीसी। केशवानंद भारती 1973 में बोला है इन लोगों ने। तब से उस समय प्राइम मिनिस्टर जी कौन जी। थी? इंदिरा जी थी। क्यों नहीं लगाया उसको? और अभी आज अगर मोदी जी बोल रहे हैं या बीजेपी गवर्नमेंट बोल रही है, सबको तकलीफ हो रही है। और बार फिर बार मारता है। कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे शपथ लेते हैं जितने लोग, यूसीसी तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, अभी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के मैं बाद तो है मैं नहीं। दिखाई देता हूँ कहाँ पर केशवानंद भारती में कहाँ पे बोला है उन्होंने, मैं ये भी बता देता हूँ पब्लिक को। इंडिया कानून पढ़ूं? इंडिया कानून ही जी पढ़ता सर। हूँ। हाँ, उसमें तो सारा लोग डाल देते हैं, दे डोंट लीव एनीथिंग आउट।
जी, आगे है। इसमें यूसीसी देखते हैं ना। हाँ, हाँ, हाँ। Article 44 enjoins the state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. Desirable as it is, the government has not been able to take any effective steps towards the realization of this goal. Obviously, no court can compel the government to lay down a uniform civil code, even though it is essentially desirable in the interests of integrity and the unity of the country. इट अच्छा इज एक डिजायरेबल इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंटेग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है 1973 में। देखो भाई लोगों, आप देख लो ये कब का जजमेंट है। 13 लोगों ने एक ही वर्ड, एक ही मतलब वाइस से यहाँ बोला इस। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी बात की है देखो, इसमें। ये देखो फंडामेंटल। केशवानंद भारती, 1973 24 अप्रैल का जजमेंट है ये। और तब से अब तक हमारी गवर्नमेंट, कितनी गवर्नमेंट आ गई, कुछ नहीं वो कर रहे हैं वो लोग। उतना ही है सर। इतना ही है, ठीक है। तो जी ये सर। भी मेरे को बताना था कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये केशवानंद अच्छा चीज भारती में, बताया। केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने वे बैक इन 1973 बोल दिया है कि यूसीसी को लेकर के आओ। तो आज की क्यों, डेट में तो ये ये भी दुनिया भर बताएगा। का उठा रहे हैं हमारे बैरिस्टर साहब, इन लोगों का मुंह बंद करो। और दिस इज हाई टाइम, एटलीस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द 50% ऑफ कंट्री। द वुमेन ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी, उनकी बात करते हैं। ठीक है दादा, इसको बंद जी करते सर। हैं। ठीक जी है। सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके। बहुत बढ़िया रहा।